Hi everyone. So today we are going to talk about organizational structure of organizing, starting with the definition of organizational structure. Yesterday while we doing importance of organizing, I gave you that when we talked about organizational structure, one word meaning of organizational structure, it means framework. I told you it is a dhacha ya sacha which is required. Exactly the same. So when we talk about organizational structure, how do we define it? It is the outlook. Okay, it is when we talk about the people, resources of the organization, we talk about the organizational structure. So it can be defined as the framework. Like I told you, rib cage hota hai, वैसा ही एक framework, ढांचा, साचा, framework within which managerial and operational tasks are performed. Managerial means people and operational means working tasks, input, output related. It specifies a relationship between people, work and resources. So when we talk about people, when we talk about work, when we talk about resources, we are talking about organizational structure. Right. So why do we need exactly the organizational structure? Now in our book, there's a big paragraph given about organizational structure and how Peter F. Drucker has told that if organizational structure is not there, it will impair the organization. The organization would not be able to work so effectively. So it is very, very important. So why exactly do we need organizational structure? Need for organizational structure is felt by organization. Why? Because as it grows in size and complexity, it needs to have some kind of framework. Now, first of all, to coordinate and correlate various resources, because there are different departments and resources are to be coordinated and correlated. You have to put them in different departments. You have to put them in different groups of similar types. So what is done? First, you need to coordinate and correlate various resources. Second, to control the operations of a business. When you talk about of a business or in a business, when you talk about the operations, working of a business, you need to have organizational structure. Why? If you don't have the structure, how will you know who is placed where? You may have a hierarchical structure, but that's also a structure. So that's again in the organization. You may have any kind of structure. You may have the structure on the basis of the types of products you're manufacturing. You may have a structure on the basis of the territory where you are. You may have, so any kind of structure, whatever the structure you have basically in the organization, it defines what kind of resources are required by you. So you need to control the operation, you need to check, you need to review, you need to go as per the plans. So you need to have a proper organization structure. To ensure smooth flow of communication. Why? Because people work in different departments. If there is no proper structure, who will communicate with whom? So there are different departments. If we talk about on the basis of functions, production, finance, HR, marketing and sales. When we know these four departments are there, it's easy to communicate. So this structure defines everything for us. It becomes easier to communicate with the heads of the particular department, and then apart from the heads, it becomes easier in case something is to be communicated to some kind of worker, the heads go ahead and communicate everything. So that's how things work in the organization. Helps in emergence of new functions and in the structural hierarchies. Again, the moment you want to add up another function, production, finance, HR, marketing and sales. I said there are four departments: production, finance, HR and marketing and sales. You want to add up R&D, research and development. Add. Nobody is going to ask you a question. You have added R&D out here, but then there should be a clarity what you are trying to do. So in case if you want to add up another function or you want to add up another structure, like for example, there are sometimes in some organization, instead of having 3 levels, they may have 5 levels, 1, 2, 3, 4, 5 levels. So you can have that kind of hierarchy also, no problems at all, but there should be clarity what kind of hierarchy or what kind of function are you following. To face environmental changes, if there are some changes in the external environment and you make the changes in the internal environment, you must know your organizational framework. To provide a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit with responsibilities, because nobody is going to ask कि Reliance का production department कैसा है, nobody is going to ask Reliance का jewelry department कैसा है. They are going to ask how is Reliance doing, what are the assets and liabilities of Reliance India Limited. तो कभी भी एक डिपार्टमेंट की या एक यूनिट की बात नहीं होगी, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी. सो इट हैज़ टू वर्क एज अ इंटीग्रेटेड यूनिट. Next is advantages of organizational structure. It clarifies chain of command. That means chain of command means
ऊपर से नीचे आ रही है, बॉस कौन है और सबॉर्डिनेट कौन है, हु इज गोइंग टू ऑर्डर टू हुम एंड हु विल रिपोर्ट टू हुम, क्लियर हो जाता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चरल हायरार्की, जब हम बात करें हायरार्की की, राइट, avoids overlapping and duplication of work. Why? Because in a department at the same post we don't have two people performing the same kind of function, so we don't have two production managers at one go for the same department. अगर हम होइजरी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वहाँ पर एक होइजरी गुड्स के लिए दो प्रोडक्शन मैनेजर नहीं होंगे, एक ही होगा। सो यूनिटी ऑफ कमांड हैज टू बी फॉलोड। प्रिवेंट्स कंफ्यूजन, अगेन people mind their own business and do their work, so there is no confusion. Helps in smooth performance of duties, like people do their own job, so there is clarity of roles, who is going to do what kind of work. When I talked about organizational need for organizational structure, I told you something about Peter F. Drucker, who said, he says that it is important to have organizational structure. Q? Why? Because ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल मतलब जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, मीन्स एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली इम्पेयर बिजनेस परफॉर्मेंस एंड इवन डिस्ट्रॉय इट। और अगर एक भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से स्ट्रक्चर नहीं है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इमीडिएटली क्या हो जाएगी, रून हो जाएगी, इमीडिएटली वर्क नहीं कर पाएगी। The organization structure of a firm is shown in an organizational chart. So how do you define organizational structure? आप define करते हो उसको एक अच्छे से organizational chart के through. When I'm going to talk about the different types of structure, I'll show you what organization chart am I talking about. Then there is something called, what are the factors affecting organizational structure? Why do we do this? This is interwoven in the topic itself. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिपार्टमेंटलाइजेशन, या जो हम बात करते हैं जो सेकंड स्टेप था हमारे प्रोसेस का ऑर्गेनाइजिंग का। सो ये फैक्टर डिफाइन करता है कि जहाँ पर सिमिलर रिलेटेड टास्क जो है एक जगह ग्रुप कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हाँ भाई एक बार ग्रुप कर लिया, अब हम काम को डिवाइड करें इस बेसिस पे। सो सबसे पहले ये एक फैक्टर इफेक्ट करता है। फिर डेलीगेशन ऑफ वर्क, आप अपना काम कैसे शेयर कर रहे हो, आर यू हैविंग अ सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, सारा कुछ अपने पास रख रहे हो या डाउन लेवल तक शेयर कर रहे हो। सो डेलीगेशन ऑफ वर्क ऑल्सो मेक्स इट, यानी शेयरिंग मेक्स इट possible task. Then grouping of similar related task is again important. Then when you talk about job people and skill, we are talking about job design. हम बात कर रहे हैं job design की कि लोगों को किसके हिसाब से, उनकी स्किल के हिसाब से, उनकी कॉम्पिटेंसी के हिसाब से उनको जॉब मिलना चाहिए. We are talking about the design of the job. Next is we are talking of span of management, very important factor from a board's point of view or otherwise also. Span of management means how many subordinates a superior can handle or manage. So when we talk about span of management, it refers to number of subordinates a superior can handle or can manage. It is very important factor. What does it show? It talks about that how people relate to the organization. Now for example, in a class, if there is a teacher and there are 50 students, so उस teacher का span of management कितने का है? 50 students का है. If there is the same class teacher is a vice principal, तो उसका span of management क्या है? मान लो वो vice principal है and she is looking after classes 9, 10th to 12th, so उसका span of management different है, right? So similarly, span of management means कि आप कितने लोगों को handle कर सकते हो. इसके फीचर्स क्या हैं और व्हाट डज इट हेल्प टू डिटरमाइन? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या हेल्प करता है? इट हेल्प टू डिटरमाइन लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर. तो जितनी ज़्यादा लेवल्स होंगी उतना आपका स्पैन जो है वो वाइडर होगा, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा. इट गिव्स शेप टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर शेप मिल जाएगी. हम कहते हैं दो टाइप्स ऑफ हैं, क्या कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है, वाइड एंड नैरो. वाइड है मतलब सिंगल मैनेजर, लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स, ज़्यादा नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स को जब हम हैंडल करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? फ्लैट स्ट्रक्चर बन जाता है. तो हम बात कर रहे हैं सिंगल मैनेजर की वाइड में, और हम बात कर रहे हैं फ्लैट स्ट्रक्चर की, और हम लार्ज नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं. लेकिन अगर हम बात करते हैं नैरो स्पैन तो हम कहते हैं अगेन एक ही मैनेजर है लेकिन सबॉर्डिनेट्स क्या है? कम है. सो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? टॉल स्ट्रक्चर हो जाता है. टॉल and flat structure is not required to understand in depth, though it is not in your syllabus, but otherwise इससे इस बात से इतनी क्लैरिटी हो जाती है कि अगर वाइडर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो आपके पास ज़्यादा लोग हैं लुक आफ्टर करने के लिए, और अगर नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है तो आपका जो पेरिफेरी टू वर्क है वो कंपैरेटिवली कम है. So this is what is about organizational structure. There are two types of organizational structure we are going to study about. One is functional and the other is divisional. Alright, now we are going to go ahead with the advantages, disadvantages as well as features of functional structure. So in organizational structure there are
two types of structures. One is functional structure and the other is divisional structure. When we talk about functional structure, we highlight at nothing else but grouping of all the similar related tasks into different functions, and then these functions actually help us to achieve the objectives. So when in an organization functional structure is created, what is done is we try to group or divide the work as per the functions which are being performed in an organization. Like for example, in a manufacturing organization, the major four functions which any organization would perform is production, finance, HR, and marketing and sales. Now under production there could be some four again sections, and under section there could be some subsections also, but basically there could be four sections. Like I've given example out here: quality control, repair, assembling, or inspection. Similarly, under marketing or under finance, there can be two or one, whatever it is. So when we divide the similar related tasks, group them together on the basis of function, it is known as functional structure. It is formed by grouping together the entire work to be done into major functional departments. Okay, we have functional departments. All related work of one kind is placed in an organization under one coordinating head. He is the one coordinating head. These are the one coordinating head. Each major function is separate department and has subsections. So there are every function has a separate department. This is department number 1, this is department number 2, department number 3, department number 4, and here I have shown you the subsections of only production department. You can subsection wise you can see any of the other departments. So this is what constitutes of functional structure. When we talk about the diagram, we can say here we have the CEO or MD or anybody else who looks after the organization. There is production, finance, human resource, marketing and sales. These people work at the same level. Here we have subsections like for example production, quality control, repair, assembling, inspection is there. And what do we conclude? Grouping of jobs of similar nature under functional or organizing these major functions as separate departments. Okay, अंडर फंक्शन ये चार फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं या इनमें चार डिपार्टमेंट्स हमने फॉर्म कर दिए, क्रिएट्स अ फंक्शनल स्ट्रक्चर. सो दिस इज योर कंक्लूसिव मीनिंग एंड दिस इज व्हाट व्हेन वी ग्रुप टुगेदर द एंटायर वर्क टू बी डन इन वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, it is known as functional structure. Now, what are the advantages of functional structure? And if you really want to know, this could be the definition. If you want to write, you can write this as definition, okay? And then you can use these as features of functional organization or functional structure. Advantages of functional structure. सबसे पहले क्या आती है? Occupational specialization. Production वाला लगातार कुछ सालों से production कर रहा है, उसी काम को perform करते करते क्या बन जाएगा? रेपिटेटिव जॉब करते करते क्या बन जाएगा? एक्सपर्ट बन जाएगा. उसमें क्या आ जाएगी? स्पेशलाइजेशन, एफिशिएंसी उसकी इंक्रीज हो जाएगी. सिमिलरली functional structure leads to occupational specialization since emphasis is placed on specific functions. This promotes efficiency in the organization because there is utilization of manpower. The employees perform same task and are able to improve performance. Same task perform कर रहे हैं because of what? Because of division of work. So they have become because they are doing division of work, they are doing it repetitive. Because they are doing it repetitive, they have become expert. Since they have become expert, they have got specialization. All right? So occupational, जिस काम में है उसकी specialization. Promotes control and coordination. Of course, similar tasks क्या है? They are being performed and it is very important to bind all and check employees at work. लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन वाला इन चारों को चेक करेगा, फिर इन चारों को कोऑर्डिनेट भी करेगा और इनको रिव्यू भी करेगा कि ये एज पर स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे. प्रोडक्शन वाले को कौन चेक करेगा? ये लोग चेक करेंगे. सो एवरीवेयर थिंग्स आर they are because if production वाला doesn't do the number of units की production on time, marketing and sales वाला बेच नहीं पाएगा. फाइनेंस वाला फाइनेंस प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, लोग छुट्टी पे चले गए तो मुश्किल हो जाएगी. तो इन चारों को भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, प्लस ये अपने सब सेक्शंस को भी कोऑर्डिनेट करता है और ये सारा काम कराने वाला टॉप जो भी लेवल पे है या उससे ऊपर डिपार्टमेंटल हेड से ऊपर है वो करेगा.
helps to increase efficiency. Functional structure helps to increase operational and managerial efficiency. Why? Because operational and हर बंदा अपना काम कर रहा है, so operational input output का सारा कुछ पता है. Managerial efficiency, आप एक काम कर रहे हैं, you get the finesse in doing that kind of work because you become expert in it, so your efficiency to work increases. जब भी आपकी efficiency increase होगी तो productivity बढ़ जाएगी, productivity बढ़ेगी तो sale बढ़ेगी, sale बढ़ेगी तो आपके profits भी बढ़ जाएंगे, right? Less duplication. Why? Because सारे के सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम कर रहे हैं, सो इट लीड्स टू मिनिमल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स. वाई? विच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल. हर बंदा अपना अपना काम कर रहा है. दिस हेल्प इन लोअरिंग कॉस्ट. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ही यही होता है कि कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा सेल्स, ज़्यादा प्रॉफिट. आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब मास स्केल प्रोडक्शन होती है और कॉस्ट कम की जाती है तो उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आता है. बल्क प्रोडक्शन हमेशा हमारे लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेकर आती है. सो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन पीपल डोंट डू रेपिटेटिव जॉब्स एंड दे do their own work. Next is training of employees. When we talk about training of employees, functional structure makes training of employees easier as focus is on only on limited range of skills. हम बार बार उन्हीं चीज़ों पे काम नहीं करते, कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हम एम्फेसाइज करते हैं या काम करते हैं. लास्ट है attention on all functions. It ensures that different functions get due attention. यानी कि हर एक फंक्शन हम अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं और हर एक फंक्शन को पूरी की पूरी तरह से अटेंशन दी जा रही है, उसके ऊपर पूरी मेहनत की जा रही है. प्रोडक्शन वाला फाइनेंस वाले के काम में टांग नहीं रहा था, फाइनेंस वाला मार्केटिंग सेल्स के काम में टांग नहीं रहा था, मार्केटिंग सेल्स वाला ह्यूमन रिसोर्स में टांग नहीं रहा था. हर बंदा अपना अपना काम करता है. नेक्स्ट वी कम टू डिसएडवांटेजेस. ऑलराइट, वी जस्ट डिड features and advantages of functional structure. I explained you through diagrammatic representation that what functional structure is like. Now we are doing the disadvantages of functional structure. First is functional empires. Yes, functional structure creates functional empires. Why? Because if you are in charge of a particular functional department and you continuously do that work and you get the expertise in it, what happens is you start getting in your mind that my department is more important than the organization. Whenever you get this intention in mind that department is more important than the whole organization, what happens is it creates a functional empire. The kind of functions you're performing, you become just limited to that particular thing. So it places less emphasis on overall organizational objectives, gives importance to objectives laid down by functional head. Such practices may lead to creation of functional empires. डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट कम हो जाता है. therefore causing hindrance in interaction. It becomes a very very big problem while interacting with people. Second point, problems in coordination. When departmental interaction is more, this is just an extension of the same thing. So when departmental interaction becomes more and organizational interaction becomes less, what happens is the departments do not want to work together. There becomes a kind of they just start looking for each other's faults and they just try to not work in sync. And when they don't work in sync because they're working for their own departmental purpose, there becomes a problem. So what happens is that when departments interaction is more than the organizational interaction, there is problem of coordination. People don't work in sync. I told you they don't work in sync. Alright, as information has to be exchanged across various departments. देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करना है और फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो 4 डिपार्टमेंट्स होने ज़रूरी है, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स. और उसमें अगर वो चारों डिपार्टमेंट्स मिलकर काम ना करें, सिंक ना हो, सिंक्रोनाइजेशन ना हो, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ना हो, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑफकोर्स कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, दिख ही रहा है कि काम पूरा नहीं होगा. कारण क्या है? क्योंकि डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन ज़्यादा हो गए देन दी ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेक्शन. सो वी स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर ओन व्हाट डिपार्टमेंट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्यों भाई? जब 4 आप सिंपल सी बात कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ. आपके पास प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये 4 डिपार्टमेंट है, ये आपस में मिल के काम नहीं कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज अमंग डिपार्टमेंट्स व्हेन डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल. ये एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है. कैसे? सेल्स डिपार्टमेंट कहता है, ये मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोडक्शन वालों से कहता है कि भाई कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बनाओ. कैसे बनाओ? कि दे आस्किंग कस्टमर फ्रेंडली डिज़ाइन जो कस्टमर गुड्स पसंद करे. प्रोडक्शन वालों को फाइनेंस वाले जो हैं वो उतना पैसा नहीं देते, ठीक है, उतने रॉ मटेरियल रिसोर्सेज नहीं देते कि वो डिज़ाइन उस तरह से बनाए, या उतने डिज़ाइनर्स नहीं देते, या एचआर वाले उनको अच्छी सैलरी नहीं देते. कुछ भी हो सकता है.
प्रोडक्शन वाले कहते हैं हम ये काम नहीं कर सकते, क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरेस्ट अलग। सेल्स डिपार्टमेंट किसकी बात कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट बात कर रहा है कस्टमर की, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच की, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि हमारे पास फाइनेंसेस नहीं है, तो वो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसेस, नो फाइनेंसेस और फाइनेंसेस नहीं है या फाइनेंसेस लेस है, तो वो कर रहा है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की बात। तो डिफिकल्टीज तो आएंगी। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इनफ्लेक्सिबिलिटी मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। वाई दिस इज सो, बिकॉज पीपल विद द सेम स्किल एंड नॉलेज मे हैव अ नैरो आउटलुक। कई बार क्या होता है, हमारे पास सेम स्किल है, अगले बंदे को देख के ना हम कई बार कहते हैं अच्छा तुम बताओगे मुझे क्या करना है, यू नो, हम उसको अलग तरह की नज़र से देखते हैं, अच्छा ये मेरे से बेटर कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें होती है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग काम कर रहे होते हैं और हम वहाँ पर ना मॉरल वैल्यूज़ के लिए काम नहीं करते हैं, हम अपने को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। तो जब लोग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं और चारों डिपार्टमेंट के लोग सेम लेवल पे हैं, तो प्रोडक्शन वाले फाइनेंस वालों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, फाइनेंस वाले एचआर वालों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, एचआर वाले मार्केटिंग एंड सेल्स वालों को अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आप एग्जाम्पल देखिए अपने स्कूल में, आपके अगर स्कूल में कॉमर्स डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है, अगर कोई टॉपर जो है साइंस डिपार्टमेंट से आ जाता है तो आप उनको कंग्रेचुलेट तो कर देते हो, पर दिल में खुशी नहीं होती, क्योंकि अगर आप कॉमर्स पढ़ा रहे हो तो आपका इंटेंशन होता है कि भाई कॉमर्स वाला ही टॉप करना चाहिए, नैरो पर्सपेक्टिव हो जाता है ना, दैट्स व्हाट इट इज़। सो देयरफॉर डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट, restriction in managerial development. The functional managers do not get training for top management position. भाई ये प्रोडक्शन फाइनेंस एचआर वाले डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, इसी पे ही काम कर रहे हैं, इनको टॉप लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, चाहे जो मर्जी आए हो जाए, राइट। सो दे लैक एक्सपीरियंस इन मैनी एरियाज, इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो लिमिटेड हो जाता है, किसमें, डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ ही। हैंस देर इज डिफिकल्टी इन हैंडलिंग दी मैनेजरियल टास्क, के टॉप लेवल के काम नहीं कर सकते, बस ये यहीं तक रिस्ट्रिक्टेड रह जाते हैं। सो ये लिमिटेशंस है किस चीज़ की, फंक्शनल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट हम आते हैं सूटेबिलिटी। तो व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इन व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनल स्ट्रक्चर सूटेबल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर इज सूटेबल जहाँ पर लार्ज साइज है, क्योंकि अगर स्मॉल साइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उसमें प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स 4 डिपार्टमेंट नहीं होंगे। वेयर एक्टिविटीज़ आर डिवर्सिफाइड, ये डिवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है, हम प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। सो एक्टिविटीज़ आर डिवर्सिफाइड मतलब दे आर डूइंग मल्टीटास्किंग, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। वेयर देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, ये चारों अपने अपने डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट है, तभी इनको ये इंचार्ज बनाया गया है। सो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन डील्स इन सिंगल प्रोडक्ट लाइन, मतलब कि एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये चारों डिपार्टमेंट प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स चाहिए होंगे। और व्हेन अथॉरिटी इज डिटरमाइंड, हमें पता है कि किसके हाथ में पावर है, वो थोड़ा क्लियर नहीं था, सो आई रोट इट अगेन, ठीक है। सो व्हेन द अथॉरिटी इज डिटरमाइंड, प्रोडक्शन, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग एंड सेल्स, उनके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है, हमें पता है ये चारों के चारों डिपार्टमेंट के पास अपनी पूरी अथॉरिटी एग्जर्ट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, काम उसी हिसाब से करते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है कि ये स्ट्रक्चर कौन सा है, फंक्शनल स्ट्रक्चर है। आई थिंक इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट विल गो टू डिविजनल स्ट्रक्चर इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय फॉर टाइम बीइंग।